We are starting with Sermon at Benaras. I think most of you must have done this chapter. If we look into the word Sermon at Benaras, we know that this chapter is related to Lord Buddha. And Lord Buddha जो थे, he was the preacher of Buddhism. तो बुद्धिज्म का जो एक प्रिंसिपल है वो है निर्वाणा. जो बुद्धिज्म का जो आपका मेन प्रिंसिपल है वो है निर्वाण. एंड निर्वाणा का मतलब हो जाता है टू फाइंड द कॉज ऑफ द पेन. जो उनके मेन कॉज होते हैं कि किसी भी दुख का जो है सबसे पहले वी मस्ट फाइंड आउट द कॉज ऑफ दैट सफरिंग. And then we need to what we call as solve the problem. और इसीलिए he went from one place to another to give this enlightenment to all. This particular chapter is dealing with a very, very serious kind of philosophy of life, which is life and death, which is death is inevitable. Inevitable का मतलब होता है बच्चा जिससे हम बचकर नहीं जा सकते, which is going to happen. No one, whether the person is a rich person or a poor, he is enjoying all the riches of his life like Madame Forestier, or sufferings like Matilda. Everyone needs to leave this world one day forever. But the main problem, what happens is that we don't understand this truth. We don't accept this truth. Because ये अगर हम सोच कर भी देखें for our nears and dears one, we cannot even think. ये एक ऐसा कड़वा, एक ऐसा भयंकर सच है which cannot be even thought in dreams. But very beautifully, with lots of examples, Lord Buddha has given this teachings to all. The chapter starts with the life of Buddha, that he was not born as Buddha, but he was born in a very wealthy family. Now, when we say wealthy family, what happens is, bacha, we have enjoyed all the riches of life, और उनका भी वैसा ही था. He never had any problems for anything. So what happened is, one day he had Marunki jo hai, he had gone for studying. He had gone for, मतलब जब वो वापस आए तो he got married. He got married to a rich prince. तो उनकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं. Now, one day while he had gone along with his charioteer, तो उन्होंने जो है लाइफ के सच को देखा. He saw that he was moving. उन्होंने एक old man, एक beggar, एक इंसान जो कि बीमार था, the dead body, and in his life he had never seen such things. He was excited. For him it was beyond some imagination. उन्होंने अपने जो है चैरियटर से पूछा कि भाई ये क्या है. So he told about the truth of life, that one day everyone grows old. There are people who have to beg for their survival. People have to suffer with incessant illness. And
the ultimate truth is one day we all need to leave this world forever. ये चीजें जो है उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी. He was disturbed. He did not understand why people are suffering, why this happens. Is there no way कि हम इन लोगों को जो है इन पेन से हटा सके? And therefore, without telling his wife or anyone in the house, he stealthily stepped out of his house, leaving his wife and son sleeping. उन्हें सोते हुए चले गए छोड़कर. And he searched for what we call as enlightenment. दर दर भटकते रहे. And ultimately, he got the enlightenment under a tree, जिसको हम लोग बौद्ध ट्री भी बोलते हैं, the tree of wisdom. And then he started giving this message to all in the world. और जब हम speech का मतलब क्या होता है? When the audience are called for on a particular purpose. And sermon होता है प्रवचन. sermon का जो हिंदी मीनिंग है वो है प्रवचन. तो he started giving his sermon. He gave his first sermon in Benaras. आपके पेपर में ये क्वेश्चन आता है that why did he choose Benaras for his first sermon? And this is because Benaras is a city of saints. बनारस साधुओं का, संतों का जो है देश है. So that is why he chose the first place as a holy area. उन्होंने वहां पर जो है ये एक स्टोरी सुनाई. The story is about a woman, Kisa Gotami, who had lost her only son. किसा गोतामी का बेटा जो है वो मर गया था. So she went from one neighbor to another neighbor to ask some medicine so that his son comes alive. कुछ लोग उस पर हंसने लगे, कुछ लोग उसके लिए बहुत sympathetic हुए, but nobody had the medicine for death. She had become mad, she had become crazy. किसी ने उनको बोला that why don't you go to Gautam Buddha who can give you the medicine. किसा गोतामी भागते हुए बुद्धा के पास आई और उन्होंने अपने बेटे को जो है वापस लाने के लिए बोला. नाउ बुद्धा जी बोले ओके, आई विल गेट योर सन रिवाइव्ड, बट द वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज you need to get me some mustard seeds. मस्टर्ड सीड्स आपके बेटा वैसे जो अगर आप हाथ में रखोगे ना तो वो हाथ में रखोगे तो यू माइट हैव सीन छोटे छोटे होते हैं सरसों, तो दे आर वेरी स्लिपरी. तो उन्होंने कहा आपको मुट्ठी भर जो है मस्टर्ड सीड्स लेकर आना. शी वॉज सो हैप्पी क्योंकि टू गेट वन फिस्ट ऑफ मस्टर्ड सीड्स वॉज नॉट अ वेरी बिग डील. तो शी सेड ओके, बट भगवान ने उनको आगे बोला the seeds must be got from a home where no one had never died. मतलब जिस घर में कभी भी मौत ने जो है अपना दरवाजा नहीं खटखटाया. There is no one who had lost their nears and dears one, friends or someone. तो she went, वो गई, सबके पास गई, सबने बहुत खुशी खुशी उसे कहा कि वी आर रेडी टू पे गिव यू द मस्टर्ड सीड्स, बट अलास ये मत बोलना बिकॉज डेथ कभी ना कभी किसी ना किसी के पास किसी ना किसी रूप में तो आया ही है. नाउ शी वॉज टायर्ड, शी सैट अंडर अ, जस्ट वो बैठ गई. दैट वॉज नॉट ये 2500 years बिफोर लिखी हुई स्टोरी है, मतलब उस वक्त की है. तो ये लाइट्स तो होती नहीं थी, तो बीच बीच में उसको जो लालटेन की बत्तियां दिख रही थी तो वो फ्लिकर कर रही थी. एंड विद दैट फ्लिकरिंग ऑफ द लाइट
she had the enlightenment in her brain. उसको समझ आया कि भगवान ने उसको जो है सबके घर में इसलिए भेजा ताकि she is able to understand that death is inevitable. She came back, she realized her mistake, she understood the truth, which is very bitter. Now, आगे भगवान जो है, लॉर्ड बुद्धा जो है, he tells that एक ह्यूमन जो है, he is like a fruit on the tree. जितना वो राइप होता है उतनी जल्दी वो नीचे गिर जाता है. एंड उसी तरीके से इंसान जो होता है वो जैसे जैसे बुढ़ापे की तरफ जाता है, he is heading towards death. In the similar manner, अगर आप मिट्टी के बर्तन देखते हो, if you look into the earthen pots, तो in the earthen pots you will see that वो कभी ना कभी नीचे गिर के वो टूटते ही टूटते हैं. इंसान का भी जो लाइफ है वो ऐसा ही है. Thus, one of the most important, one of the most bitter truths of our life, death, इसको जो है बुद्धा अपने सरमॉन के थ्रू he tried to give it to all. तो द चैप्टर के अंदर आपके एज अ बोर्ड क्वेश्चन, जो लास्ट में मैंने आपको अर्दन पॉट्स वाला बोला था, राइपन वाला बोला था, उसमें से क्वेश्चन आया हुआ है. Once or twice who was Kisa Gotami and what was a grief भी आया हुआ है. Describe Buddha's life before he became Buddha या how did he become Buddha, ये एक आध बार आया है. But thematic question that is based on the theme of life and death, you can expect more. And as I said that Buddhist principle होता है निर्वाणा, यानी कि किसी भी परेशानी को दूर करना. और परेशानियां हमारी तभी दूर होती हैं बच्चा जब हम उस परेशानी का कारण भी ढूंढते हैं. So that is where this chapter comes. A very good chapter, very very philosophical and powerful chapter. While we read this chapter, we understand, but definitely understanding जो है that can never equal your pain. Understanding से हम उस truth को accept नहीं कर सकते हैं. I lost my father 7 years back. 6 years back, 2016. And my father was, मेरे पापा जब थे, he was a very simple man. Simple in the sense कि really simple. No tantrums. He never wanted anything in his life. मैंने उनके जैसा सिंपल इंसान अपनी पूरी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं देखा. It's not because I love my father, but he was really a gem. और ये बात मुझे उनकी डेथ के बाद ज्यादा पता लगी. How I'll tell you, he never, मतलब हम लोग ना उनको कुछ भी बोलते थे, पापा ये कर, उनको नहीं था, बस उनको एक अच्छा मकान बनाना था, अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ देनी थी. उन्हें नहीं पता था what is public school, private school, उन्हें कुछ नहीं पता था. He never even knew the names of my teachers. You won't imagine. उनको तो ये भी नहीं पता था मैं कौन से सेक्शन में पढ़ती हूँ. हाँ, मैं ए में थी, वो अलग बात थी, बट ही नेवर न्यू. ही नेवर केम टू, बस वो ड्रॉप करने आते थे, सुबह ऑफिस जाने से पहले मुझे ड्रॉप करते हुए जाएंगे. तो ही नेवर had any expectations. In fact, when my mom would grudge that I'm a daughter, not a son, so he would say no, I'm very happy that I have daughters. He never expected anything. किसी ने उनको कुछ नहीं दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी कुछ भी नहीं बोलते, मतलब not at the back also. In fact, he would be very happy even कोई rich आदमी आकर उनके आगे उनसे हाथ जोड़ देगा, मतलब करेगा that person came and. तो जैसे जैसे
मोबाइल्स वगैरह आ गए तो हम लोग उनको जो है जिद करते थे कि पापा मोबाइल रख लो. आफ्टर 10 days I'll see that mobile was lying in home. नहीं बेटा वो बहुत बचता है. मेरा जो ऑफिस वाला ना बॉस मुझे बुलाता रहता है, इसलिए मैंने मोबाइल रखूंगा. He would never indulge in any talk with anyone. Nothing. No, no, no means no. Now it was second day after Dashara. तो मैं अपने इंस्टीट्यूट से उनसे रोज मिलने जाती थी, मम्मी पापा से. तो आई वेंट, ही वाज ऑल ओके. हम लोगों ने खाना वाना भी खाया. शाम को मम्मी ने कहा कि पापा खाना नहीं खा रहे हैं, तो आई वेंट एंड ही सेड कि मम्मी ना बहुत ज्यादा तेल डाल देती है. देन आई सेड ओके पापा यू मेक स्पिनच. मम्मा स्पिनच. मम्मा ने कहा अच्छा मैं स्पिनच बना देती हूँ. मॉर्निंग सैटरडे for 24th October, he spoke to my daughter, and within 10 minutes my mom called कि पापा की तबीयत खराब हो गई है. Till we reached, he was no more. I could never, 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 and till date, I cannot imagine that he is not with us. I literally मैंने डॉक्टर का जो है ना गला पकड़ लिया था कि डॉक्टर ऐसा मत बोलो, because I was the one who went inside. सबने बोला रमा तुम जाओ अंदर डॉक्टर से बात करो, यू आर मोर करेजियस. तो मैं उनको लेकर उनकी डेथ मतलब बॉडी को लेकर हुई थी. आफ्टर हिज डेथ दोज पीपल जिनका हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था ना, दोज पीपल कॉल्ड अप और केम कि ये मतलब ही वॉज अ मैन. नो नो नो. मतलब आई कुड लिटरली सी पीपल क्राइंग फॉर हिम जिनका मैंने कभी सोचा नहीं था. बट आज तक I cannot believe that my father is not there. मुझे ऐसा ही लगता है he is still there. I never feel that he is not there in that house. Though सब कुछ मैंने ही किया था, being the eldest daughter and my husband being the eldest. लेकिन death एक ऐसा bitter experience है which we need to accept because life चलती रहती है. One person who has gone to the heaven will not stop the world from functioning. जब हमारे नियर्स एंड डियर्स जाते हैं तो शायद हम 10 दिन रोते हैं, लेकिन जिंदगी का कोई काम नहीं है जो नहीं रुकता. ना हमारा खाना खाना, ना हमारा हंसना, ना हमारा बोलना, ना हमारा. बट वी नीड टू अंडरस्टैंड that this is the natural phenomena, this is the life cycle. The death of a person signifies the birth of another person in the world. So this is the chapter, the sermon at Benaras. I'm starting the chapter along with NCERT. Gautam Buddha began life as a prince named Siddharth Gautam. This can be your MCQ. In northern India, basically ये आपका पटना की तरफ है. At 12, मतलब हमारा टाइम नहीं था जब स्कूल्स होते थे. Even if a person is pregnant तो उससे पहले घर में फोन आता है कि आप रजिस्टर करवा दो. Schooling was not this way what we are having. उन दिनों में स्कूलिंग का मतलब है reading the scriptures, learning basic ethics. So he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures. Scriptures मतलब बच्चा आपका ग्रंथ, जो हमारे ग्रंथ है, वेद, उपनिषद, इन सबको बोलते हैं, गीता. And 4 years later he returned home to marry a princess. They had a son and lived for 10 years as befitted royalty. आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, what does it mean? Befitted royalty matlab all the riches of the life, all the royal enjoyment, all the luxuries of the life जो राजा रानी रहते हैं. At about the age of 25, the prince
heretofore shielded from sufferings of, heretofore मतलब अब तक, shielded मतलब बचा कर रखा था, from the sufferings of the world, while out hunting, chanced upon a sick man, an aged man, a funeral procession, and finally a monk begging for alms. उन्होंने एक बीमार आदमी, एक बूढ़े आदमी, एक भिखारी और मतलब कि एक फ्यूनरल को देखा. These sights so moved him that he at once went out in the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. मतलब वो इसी चीज को से बाहर निकलना चाहते थे. He wandered for 7 years and finally sat down upon under a peepal tree where he vowed to stay until enlightenment came. आपके पेपर में ये आता है बेटा कि किस ट्री के नीचे वो बैठे थे. Enlightened after 7 days, 7 साल तक वो घूमते रहे और उसके बाद वो एक पीपल ट्री के नीचे बैठे और उसके 7 दिन बाद he got the enlightenment, and that tree is called as the Bodhi tree. It's still called. And began to teach and to share his new understandings. At what उनका नाम क्यों बुद्धा पड़ा? At that point he became known as Buddha. मतलब बुद्धि का awaken होना. The Buddha, अगर आप देखो तो the Buddha लिखा होता है. Preached his first sermon at the city of Benaras. आपके पेपर में आता है why he chose Benaras, most holy of the dipping places on the river Ganges. That sermon has been preserved and is given here. और वही यहाँ पर हमने दिया है. It reflects the Buddha's wisdom about one inscrutable kind of suffering. Inscrutable means which we never can understand. Inscrutable मतलब that can never be understood. और वो क्या है? Kisa Gotami had an only son and he died. In her grief, she carried the dead child to all her neighbors, asking them for medicines. And people said she has lost her senses. The boy is dead. पागल हो गई है, मर गया है और कह रही मेडिसिन दे दो. At length मतलब after some time, Kisa Gotami met a man who replied to her request, I cannot give thee medicine for thy child. I cannot give thee matlab it's a old kind of it. I cannot give you the medicine for your child, but I know a physician who can. And the girl said, pray tell me, sir, who is it? तो उन्होंने कहा, go to Sakya Muni. बुद्धा के लिए यूज होता है मुनि, द बुद्धा. किसा गोतामी रिपेयर्ड मतलब ये एक रिपेयर्ड यहाँ पर रिपेयर नहीं है. इमीडिएटली वेंट देयर और उन्होंने कहा, लॉर्ड एंड मास्टर, गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माय बॉय. द बुद्धा आंसर्ड, आई वांट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड. एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस्ड टू प्रोक्यूर इट, खुश हो गई, अरे एक मुट्ठी mustard seed. The mustard seed must be taken from a house no one has lost a child, husband, parent or friend. यानी कि जिसने कभी जिंदगी में किसी भी तरीके से किसी को ना खोया हो. Poor Kisa Gotami now went from house to house and people pitied her. Pitied मतलब उसको sympathy करते थे, उस पर दया करते थे और कहते थे, here is mustard seed, take it. लो. जब वो पूछती थी, डिड अ सन और डॉटर, मदर और फादर डाई इन योर फैमिली, तो वो लोग कहते थे, लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मेनी. जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे नियर्स एंड डियर्स हैं, डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ड्रीम. एंड देयर वाज नो हाउस बट सम बिलवर्ड वन हैड डाइड इन इट. कोई ना कोई तो किसी ना किसी ने तो किसी को खोया था, पास का या दूर का. किसा became weary and hopeless. आपके पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि why she became weary and hopeless.
and sat down at the wayside. Wayside मतलब रास्ते में side में. Watching the lights of the city as they flickered and were extinguished again. मतलब वो बुझते और उसके बाद बंद, सॉरी वो फ्लिकर करते और बुझ जाते. At last the darkness of the night reigned everywhere. मतलब अंधेरा छा गया, रात हो गई. रीन मतलब ऐसे होता है रूल. And she considered the fate of men that their lives flicker up and are extinguished again. और वो लोगों के बारे में सोचने लगी, जिंदगी कैसी है, जिनके जो लोग होते हैं उनकी जिंदगी उतार चढ़ाव बुझ जाती है. And thought to herself, how selfish am I in my grief. Death is common to all, and yet in this valley of desolation, desolation मतलब बच्चा sorrow, deep sorrow, there is a path that leads him to immortality who has surrendered all selfishness. अगर हमें इस दुख से बाहर आना है, if we need to come out of this deep sorrow, we need to leave our selfishness. Then only we would be immortal. Immortal का मतलब ये नहीं है कि we would never die. We would come out of our sorrows. The Buddha said. अब यहाँ से जो आपको मैं करवाने वाली हूँ, these are very, 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 very important. The life of mortals in the world is troubled. Mortals मतलब the person, the thing which is bound to be dead. जैसे humans are mortals, sea is immortal. The life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain. मतलब the humans are bound to suffer and their life is short and it is full of pain also. For there in not any means by which those that have been born can avoid dying. After reaching old age, there is death. Of such a nature are living beings. इंसान का जो लाइफ है वो ऐसा ही है. आप कुछ भी कर लो, once you reach old age, you are bound to die. हाँ, ऐसा नहीं है कि जो लोग मतलब कोई पहले नहीं मर सकता है. Definitely illness, accidents and unfortunate events are there. But बुढ़ापा तो सीधा डेथ का ही सिग्नल है. As ripe fruits, ये जो पैराग्राफ है, this is very, 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 very important. As ripe fruits are early in danger of falling, so mortals when born are always in danger of death. मतलब पेड़ पर आप देखो कच्चे फल भी हैं और पके हैं. कच्चे फल इतनी जल्दी नहीं गिरेंगे, बट पके हुए फल जो है वो जल्दी गिर जाते हैं. सिमिलरली जब इंसान पक जाता है यानी कि ओल्ड हो जाता है, तो ही इज इन डेंजर ऑफ लिविंग दिस लाइफ फॉर एवर. As all earthen vessels made by the potter end in being broken, so is the life of mortals. जिस तरीके से कुम्हार जो बर्तन बनाता है वो कभी ना कभी टूट जाते हैं, उसी तरीके से इंसान को कभी ना कभी इस दुनिया को छोड़ना पड़ता है. Both young and adult, fool and wise fall into power of death. All are subject to death. Death, rich, poor, fool, wise, किसी को देखकर नहीं आती. It doesn't come to the person who is fool, who is rich, who is poor. It comes to everyone, maybe किसी के पहले तो किसी के बाद में. Of those who overcome by death depart from life, a father cannot save his son nor kinsman their relations. Mark. While relatives are looking on and lamenting deeply,
One by one, mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter. कहते हैं कि सब में से of those who overcome by death depart from life. मतलब जो जा चुके हैं वो भी हमें नहीं बचा सकते, जो रह गए हैं वो भी नहीं. एक फादर अपने बच्चे को या कोई किन्समैन मतलब रिलेशंस, एक रिलेटिव दूसरे रिलेटिव को नहीं बचा सकता. मार्क, यहां पर जो मार्क करके एक्सक्लेमेशन है, दिस इज टू मेक यू टेल अंडरस्टैंड. ये जो एक्सक्लेमेशन है, दिस हैज बीन यूज फॉर अंडरस्टैंड. जब तक रिलेटिव्स एक इंसान के डेथ के लिए लैमेंट मतलब ग्रीव करते हैं, तब तक एक एक करके सब लोगों की बारी लग जाती है. जैसे एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर, जिस तरीके से जानवरों को कसाई लेकर जाता है काटने के लिए. सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके. डिके वैसे तो होता है सड़ना, बट यहां पर इट इज फॉर सफरिंग्स. Therefore the wise do not grieve, knowing the terms of the world. And अगर आपको खुश रहना है, if you want to, then we must not lament for those who have death. It's really very difficult to say this word. Personally nobody can lament. नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता. बट यहां बुद्धा जी का कहना है कि वी मस्ट ओवरकम. वी कैनॉट सिट, वी कैनॉट लैमेंट. द लाइफ गोज ऑन. नॉट फ्रॉम वीपिंग, नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड. अगर किसी के जाने के बाद हम रोते रहें, हम दुखी होते रहें, तो वी वुड नेवर बी एट पीस. On the contrary, his pain will be greater and his body will suffer. उल्टा उसका दुख और ज्यादा होगा. जितना आप अपने दुख को सोचोगे उतना आपका दुख ज्यादा होगा. जितना आप अपने आप को तकलीफ दोगे उतना आपकी बॉडी तकलीफ में आएगी. Very, very true. Sometimes, while we are sitting, there are so many things that gives us pain. And ह्यूमन नेचर है कि जल्दी हम उस चीज को सेंसिटिव होते हैं, तो वी स्टार्ट क्राइंग. बाद में क्या होता है, सर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, पीछे दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है. एंड ऑल अदर क्या होगा, अपनी बॉडी तो सफर करती है, वो पेन कभी कम नहीं होता. So we need to understand the truth of the life. He will make himself sick and pale, yet the dead are not saved by his lamentation. वो खुद को बीमार कर देगा, वो खुद जो है और कमजोर हो जाएगा, लेकिन फिर भी जो लोग मर गए हैं वो वापस नहीं आएंगे. उसके इस दुख से, उसके इस एक्सप्रेशन से मरा हुआ वापस नहीं आएगा. ये हमें समझना चाहिए. He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation and complaint and grief. जो चाहते हैं कि वो शांति से रहें, those who want to live in solace, उन्हें जो है इस तीर को निकाल के फेंकना पड़ेगा. That is sorrow, complaint and grief. He who has drawn out the arrow and has become composed. Composed मतलब बच्चा बिल्कुल शांत. यहाँ पर compose is not used for as a verb, it is used as noun. Compose होता है when you are calm, tranquilized. Tranquilized मतलब बिल्कुल शांत. Will obtain peace of mind. He who has overcome all sorrow will be free from sorrow and be blessed.
That is what he wanted to convey to the world, that life is not so easy. Humans, definitely we all are greedy. ऐसा नहीं है कि हम सेल्फिश नहीं है. हम में से कौन होगा ऐसा जो कि अपने नियर्स या डियर्स को खोना चाहता है? नो वन ऑफ अस, नो वन ऑफ अस. बट देन life goes on. The death of a person does not stop us from moving ahead. Maybe a day, 2 days, 3 days, we can lament, we can cry for some day, but ultimately, what will happen is we need to overcome that. And that's a beautiful chapter. Though this chapter is very beautiful, maybe from the point of view of a child it might not be that much, but मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चैप्टर पढ़कर भी. ये और भोली दोनों मुझे बहुत अच्छे लगते हैं personally, because both of them have great values. Both of them teach us the reality of our lives. Yet certain things cannot be overcome just by reading. Now let us come to the question answer part. Besides your what we call as MCQs, ये जो questions हैं, they are also important from this chapter. And as I told that this chapter has more thematic. तो जो theme है chapter का कि भगवान या लॉर्ड बुद्धा जो है, why he wanted to give the sermon, what is the message, वो इस chapter का जो है very important है. Then ये जो paragraph now I had taught you, the last one, the life of the mortals in this world is troubled wala, as ripe fruits are early in danger of falling wala. These questions have come as an application based questions and can come as an application based. Means इसका meaning क्या है? Let us just, I'm telling you all the 5 questions. When a son dies, Kisa goes from house to house. What does she ask and does she get it? So that's a simple question. She asks for the medicine and she doesn't get because her son was dead. Kisa again goes from house to house. The second time, what does she get? She wanted the mustard seeds. अब जो third question है, what does Kisa understand the second time that failed to understand the fath? Was that Buddha wanted her to understand? Yes. पहली बार में she was not able to understand that there is no medicine for death. But second time she was forced to relate herself, क्योंकि बुद्धा जी ने ये शर्त लगाई थी that you should get the medicine, you should get the mustard seed only from the family where they have not witnessed death. So she could understand. Why do you think किस्सा ये पेपर में भी आया हुआ है, और वो वही है क्योंकि second time with the help of Lord she was able to find the answer of that question जो वो समझ नहीं रही थी. Then how do you usually understand the idea of selfishness? हमारे लिए selfishness क्या होता है? If we look into a very simple way, selfish का मतलब होता है a person who thinks only about himself or herself. Do you agree? Kisa was that she was being selfish. यहाँ पर the selfish is not in that way बेटा, जो हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं. यहाँ पर it is not in a negative, but yes, she was selfish because she was not able to understand the bitter truth of life. She was not able to understand that once a person is dead, the person cannot be alive. We cannot bring him back to life.
तो अगर हम उस तरीके से सोचते हैं तो यस, शी वॉज सेल्फिश। बट यहाँ पर जो सेल्फिश है, इट इज नॉट इन दैट मीनिंग, आपके उस मीनिंग पे नहीं है जैसे हम नॉर्मली कम बोलते हैं सेल्फिश मतलब बहुत ही जो ना, ही इज वेरी सेल्फिश। देखो कितना सेल्फिश है ये, मतलब अ पर्सन हु ओनली थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो यहाँ पर वो एक तरफा नहीं है। शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस इन हर ग्रीफ। उसके सोचने और समझने की जो शक्ति थी वो खत्म हो गई थी। शी वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट शी वॉज नॉट द ओनली वन हु इज विटनेसिंग ऑल दीज थिंग्स। देन बच्चे, आप लोगों के पेपर के अंदर आता है एक क्वेश्चन, हाउ डिड बुद्धा became sorry सिद्धार्थ बिकम बुद्धा। तो आपको उसके अंदर बताना है that at the age of 25 when he witnessed the sufferings of the world, he enrooted through the while he had enrooted through his city, he decided to leave, he decided to, हम लोग क्या कहते हैं, renounce, he decided to renounce the luxuries of life, wandered for 7 years, and one day he decided to sit under a peepal tree, and after 7 days of that he got that enlightenment. Then आपके पेपर के अंदर आता है कि उसका नाम जो है, why it has been put as बोध ट्री। तो बोध ट्री इसीलिए है क्योंकि वो ट्री ऑफ विजडम है। It is the tree under which Buddha got the enlightenment. ये आपके पेपर में ये दो एक दो क्वेश्चंस जो है, they have also come in the paper, so you can मतलब you should also remember, we will be doing all these but these are some of the most important questions.